So here I've explained the two tenses. The first one is passé composé. The second one is l'imparfait. And as you all know that with passé composé, we tend to use auxiliary avoir for most of the verbs except for 16 verbs, and we have a list of that. And how do we form passé composé is that we choose which category verb is that. So if it's as category, so we tend to use e accent aigu. If it's er, then we tend to use e. That's it. That's how it formed. And for OER, verb, it varies. So voir becomes you, prendre becomes pris. Now it's so now comes a turn of verbs that use être. First one is aller. So I told you that we use opposites method. So what that means is it's easier to cram 7 verbs, and then if you know these 7, and if you know the opposites of these verbs, it's very easy to judge. Instead of you learning 16 verbs, it's doable, yes, but to simplify that, we have one verb and its opposite. Like as if aller means to go, rester means to stay. So just have to learn aller, and then you ask yourself what's the opposite of aller, is rester, and then you say yes. That also we conjugate with the auxiliary être in passé composé. Second is arriver. Arriver means to come, partir means to leave. Entrer means to enter, sortir means to exit. Monter, go up, descendre, go down. Mourir, die, naître, to be born. Passer, pass by, rester, stay. Venir, come, devenir, become. It's a contrary of that venir because we have the anyway. So apart from that, there are some other verbs that tomber, retourner, rentrer, apparaître. So with these verbs also, we tend to use auxiliary être in passé composé. Other than that, all the verbs except these ones, we use auxiliary avoir to conjugate the verbs in passé composé. Okay, the past tense. So examples: Kunale venue. So now the thing is, when we are using être, we have to keep into consideration the accordance, the concordance of the subject with the verb, with the gender and the number. So Kunal is masculine singular. So il est venu. So I wouldn't add e after that. So that's it. If I happen to use the name of a girl or a lady and a venue, so I have to add extra e after that. So mes parents. So masculin pluriel. So venue s. Mes sœurs, my sisters. Feminine plural. So I have to add es. Venue. So so if you are using these verbs, you have to take into consideration the accord because it agrees in gender and number of the subject. Now comes सॉरी फिर तो रिपीट करें जनरल definitely. So first of all, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, like let's take a simple example. Je j'ai mangé. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ manger verb ਕਿਹੜਾ manger. Okay, it's not in 17 verbs, 16 or 17 verbs. Some books it's 16, but in some books it's 17. So it's like, so I would just tend to call 16 all the time, right? So we know that manger is not in that category, so we will use auxiliary avoir for that, right? But the problem is I should know the past participle of the verb manger, which I know that er verbs, how to form the past participle of er and français er category.
just adding accent aigu, accent aigu on top of that. So that becomes j'ai mangé. So next comes if I happen to choose a verb that's in the list of 16 verbs where I have to use auxiliary être to conjugate them, then I have to take into consideration the accordance. I have to accord. I will give an example for that. Je suis allé. It means I went in English, and not j'ai allé, because we use in the past tense auxiliary être pour the verb aller. So this is the verb aller. Aller is the past participle of so verb aller, and je suis allé. Now you see that since since I used auxiliary être, I have to keep into consideration the l'accord. L'accord is you have to add extra e or s if it's plural. Example, elle elle est allée. If a girl is going somewhere, elle est allée, then she will say like that, elle est allée, extra e, because we have to take into consideration the subject. Who is the subject? So let's say if Gargi were to say je suis allé, Gargi will write it like that because she's feminine, right? Gender. So je suis allé. If Rumi would like je suis allé, like that. Same with the plural. Nous sommes allés. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Ils sont allés. But if we want to say elle, then it's feminine plural. Then we have to say elles sont allées. See here, I added extra e as well because all women or all girls went, all of them. But if I were just using generally, so generally, in French, so if I'm talking about a group, let's say in a group there are 100 people and there are two men, 98 women, then it's a masculine. So then we tend to use masculine, ill, and with ill, just an s. So when we make an announcement or a letter, so it's in written in masculine sense. Even the women, which they tend to write masculine in the masculine sense. It's hard for me to explain that thing, but you will see with examples we will do today. So this is a list of examples to practice this, and just giving the base before we come here. So this is the base. Any more questions, please? Rumi, all good? Yeah, all good. थोड़ा डाउट क्लियर हो गया कि नहीं है जी? You need हाँ more वो उसको आ explanation. गया, जेंडर ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਟ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਥਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਬਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਐਤਰ ਨਾਲ।
Just ਆਲੇ from ਨਾਲ ਤੇ ਐਤਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਆਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਐਤਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਹੈ, ਇਟਸ ਹੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰੈਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਜਸਟ ਵੀ ਰੈਸਤੇ। ਸੋ ਜਸ ਵੀ ਰੈਸਤੇ, ਐਲ ਐਲੇ ਰੈਸਤੇ, ਐਲੇ ਰੈਸਤੇ, ils sont restés। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ 16 ਵਰਬ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ them by heart, you have to cram them। ਆ ਜਿਹੜੇ 16 ਵਰਬ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਐਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਤਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਐਤਰ ਵਾਲਾ, ਐਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਤਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਜਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਹਾਂ, ਜ ਐਤਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਐਤਰ ਟੂ ਵੀ ਜਸਵੀ ਤੂਏ ਹਾਂ, ਇਲੇ ਚੂਏ ਇਲੇ nous sommes ils sont vous êtes vous êtes sorry vous êtes vous êtes ils sont। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਤਰ ਤੇ ਅਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਤਰ ਟੂ। ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ J tua Ilea il a, nous avons vous avez vous avez, ils ont ils sont। ਲੇਜ਼ੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ONT, ਬਟ ਲੇਜ਼ੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਲੇਜ਼ੋ is very important, is take into consideration that ils ont, vous avez, nous avons, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ il a, tu as, j'ai। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਐਤਰ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ now the next thing is, if we use this one ਐਤਰ, then we have to take into consideration the accordance। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਚੱਕਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹ ਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ we'll just do simple sentences, j'ai mangé, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai parlé। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। so coming back, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ you should okay, first of all ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ you should know how to make the past participle। ਜਿੱਦਾਂ parley verb ਹੈ ending in er, just add x ਦਾ egu। so er ਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ, just add e, fini, ਉਹ er ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਦਾ ਵਿਊ ਵਾਕ ਦਾ ਵਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਨ ਦਾ ਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। so it depends which you're using, and that's it। okay, these are 16 verbs that we use: aller, rester, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, mourir, naître, passer, rester, venir, devenir, and plus these three: tomber, retourner, rentrer, apparaître। You can just make a memorizing aid, you have to learn it, okay, there's no other way। Even francophones, Quebecers, they just cram these, they make a list or they sing songs to learn these. I've seen little children how they are using that, this we have to conjugate with that, they make notes
and then they read, and then that's how they try to do it. There is no other way. ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਵਾਰ ਤੇ। ਅਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ I told you that there is we have to take into consideration the accordance we call it. So when we do that, when the COD is before. So here the COD is after. Elle a écrit des lettres. So COD is after. So no problem. Elle a écrit. But when the COD is before, ces lettres, elle les a écrit, then we have to accord that. So lettres is feminine, plural, TES. But we will not touch these examples. Before that, we will practice more about complement d'objet direct and complement d'objet indirect. We will practice that before, and after that we will take into consideration passé composé. So for instance, we are just focusing on this part, écrit. So I just want you to just learn the past participle of the verb écrire. That's écrit. That's what you should know. That's it. I do not expect anything that else other than that. That is it. And let me see if I can show you quick video, small video that could be helpful to you guys. How to form these puzzle composing. So I'm gonna share my screen. So let's learn from other top person's point of view. I told mine first. Today we will see le bonjour à tous and welcome to your French lesson of the day. So it's la leçon du jour. Today we will see le passé composé, really important tense. So le passé composé is like all the composed tense of the French language. First you will have to use avoir or être, and then second part is the participe passé. Okay, so first thing, keep in mind that avoir is used for most of the verbs, all right? But then we're using être for all these verbs we call les verbes réfléchis, so all the verbs starting with se, okay? And then we're using être as well for the following verbs: aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, monter, passer, descendre, rester, tomber, devenir, naître, mourir. Okay, so keep in mind that all these verbs are using être when it comes to passé composé, or then more generally to all the composed tense of the French language. Okay, so the second part is le participe passé. So for the first group of verbs, these verbs are ending with a er. So you only need to take this er away and to put accent aigu, so you will pronounce e, okay? And then, well, it's quite easy because it's the same pronunciation. So infinitive form is parler, and then participe passé is parler, okay? When it comes to the second group of verbs, so ending with er, so take this er away and put I instead, and then, so infinitive is choisir, and it will become, for the participe passé form, choisi. Okay? Other category, but then many exceptions with this one, but anyway.
So verbs ending with re, so you just take this re away and you put u instead. So a good example is vendre, okay, and it will become vendu. Okay, so as I said, the difficult thing is that we've got many exceptions. So let's see, well, the stars of the exceptions. So the first one is être, and it becomes été, avoir, eu, faire, fait, venir, venu, prendre, pris, écrire, écrit, dire, dit, voir, vu, tenir, tenu, mettre, mis, ouvrir, ouvert, naître, né. Okay, so now what we need to see is the present form of avoir or être, because that is the form you will have to use in the first part. Okay, so avoir is j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Let's see them again. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. And then être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. You can repeat them. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Okay, so a few examples now with avoir. J'ai mangé, tu as fini, il a écrit, elle a été, nous avons eu, vous avez pris, ils ont acheté, elles ont choisi. Okay, so we can repeat them again. J'ai mangé, tu as fini, il a écrit, elle a été, nous avons eu. So ਜਿਹੜਾ ਇਲ ਹੈ Yeah, go ahead. ਉਹ ਇਹਨੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜਾ ill ਹੈ ਲਾਈਕ ਇਲ ਆ ਇਕਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਟੀ ਪਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਅਵੁਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਸਟ ਕੰਪੋਜ਼ੇ। ਅਵੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਸਿੰਪਲ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਰਾਈਟ? ਦੈਟਸ ਇਟ ਸਿੰਪਲ। ਇੱਕ ਮਾਂਜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂਜੇ, ਪਨੀਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਨੀ, ਇਕਰੀਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕਰੀ। ਤਿਉ ਨੇ ਆਈ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ, ਲਾਈਕ ਤਿਉ ਫਿਨੀ ਆਈ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਫਿਨੀਰ ਦਾ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਇਜ਼ ਫਿਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਵਰਬ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਫਿਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਨੀ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਉਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਚਲਾਓਗੇ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਲੌਗ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਗਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਚ ਇਟ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀਡੀਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ दोबारा या समझा के ओके अभी से हाँ अगर कर सकते ना, डेफिनेटली। Passé composé, really important tense. So le passé composé is like all the composed tense of the French language. First you will have to use avoir or être, and then second part is the participe passé. Okay, so इतना क्लियर है अब तक कि हमें पहले avoir या être यूज करना, हाँ, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब है, वर्ब का। या सो वर्ब का जैसे मैं बताऊं, फिनीर का क्या है, फिनी, इकरी का इखरी, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है।
आले का क्या है आले, रेस्ते का क्या है रेस्ते, मांझी का क्या है मांझी, दौरमी का क्या है दौरमी, दौरमी, शांति का क्या है शांति। लिखते हैं जैसे ई अ, 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 जब जो है पास्ट पार्टिसिपल उसका है अक्सा इग्यू, क्या। और ऐसे ही फ्रांस का क्या है फ्री, ये आपको याद ही करने पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो बस यही है, ये दिमाग में फॉर्मूला उठा लो अपने, अब वो आर जा एथ उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, दैट्स हाउ यू फॉर्म पास्ट कंपोजिट। ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है जी, चले आगे। जी ओके, passé. Okay, so first thing, keep in mind that avoir is used for most of the verbs, all right? But then we're using être for all these verbs we call les verbes réfléchis. So all the verbs starting with se, okay? And then we're using être as well for the following. अब ये कह रहे हैं कि भी जो अब वो आ रहा है, we use them for majority of the verbs except those 16 plus other reflexy verbs reflexy. So those verbs in which person does action on himself. Je me lève, c'est lever, c'est brosser, je me brosse les dents, je me brosse les dents, I brush my teeth. So the verbs in which the action is done by the verb itself. So these are called reflexy verbs. So with être and all the reflexy verbs, we will do that afterwards, but we are not touching yet. For now, we are just focusing on avoir and être and those 16 verbs with être. So this is a list of from those 16 that I told you a method to cram them, right? By opposites method. So you will find verbs from those list here now. Verbs: aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, monter, passer, descendre, rester, tomber, devenir, naître, mourir. Okay, so keep in mind that all these verbs are using So if you don't know the meaning of any of these, please let me know. I'll tell you now. आले हो गया कम, विनी हाँ, हो गया कम, आले हो गया गो, पनीर कम, तम, हाँ, सर्दी, बाहर जाना, बाहर जाना, मौत को क्लाइम करना, यस, मुरीर की ਹੁੰਦਾ डेथ, डेथ, टू देवनी, डाई, ते रेस्ट नेट, ਹੁੰਦਾ रेस्ट करना, हाँ, डिसेंडरे ਹੁੰਦਾ डिसेंड करना, यस, पास से ਹੁੰਦਾ किसी ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, पासे ਹੁੰਦਾ पासे, पासे ਹੁੰਦਾ to go, टू गो go, राइट, yeah, to pass by or go, पास बाय किसी ਨੂੰ yeah, पास, हाँ, ਨੈਤਰੀ नहीं पता ਮੈਨੂੰ ਕੀ है, नेत्र ਸੀਗਾ to take birth, to give birth, नेत्र, right, देवनी हो गया बिकम, to become, हाँ जी, भारतीर हो गया to go, जोर लग रहा है, टू लीव काइंड ऑफ, yeah, yeah, to leave, yeah, अरीवे हो गया वो आ रहा है, yep, exactly. être when it comes to passé composé, or then more generally to all the composed tense of the French language. Okay, so the second part is le participe passé. So for the first group of verbs, these verbs are ending with a er. So you only need to take this er away and to put accent aigu, so you will pronounce e. Okay, and then well, it's quite easy. So now they are showing us how can we form them. So you take the verb. If the verb is from first category, it's very simple. You remove the root, the base, that's ending, that's add accent aigu. That's how you form it. That's very simple. And then they're showing us how to form second category. You remove er and then you add just I. That's it. For third category, you removed er and you just add u. That's how you form the past participle. पार्टिसिपेट,
Okay, So ये verbs के हिसाब से होगा ER IR ना कि exactly. I ill या तू उसके हिसाब से. नहीं नहीं नहीं, वर्ब के हिसाब से होगा. हाँ. ये आई इल तो कुछ नहीं है, ये तो मतलब सब्जेक्ट तो है, हम्म. तो वो उसका कोई और ये चक्कर नहीं. जेंडर के हिसाब से चेंज भी हो जाएगा. कैसे? जेंडर के हिसाब से एथ चेंज हाँ, भी होगा. एत्र में होगा, लेकिन इसमें अब इसमें नहीं होगा, अब वो इसमें आर नहीं में नहीं होगा. होगा, अब वो आर एथ में नहीं में होगा. होगा, एत्र में होगा डेफिनेटली. या. देखो एत्र में पता क्या होगा, आप कंफ्यूज हो रहे हो आई थिंक. सो ये तो सेम ही रहेंगे पास्ट पार्टिसिपल. जेंडर के हिसाब से आपको सिर्फ पीछे या ऐसा लगा देना है बस, और कुछ नहीं है. जेंडर के हिसाब से आपको सिर्फ वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल, उसके पीछे ज्यादा लगा देना या एस. दैट्स इट. बेस वही है. रुको मैं बताता हूँ आपको. मैं लिख लिया मैंने साइड पे. नहीं वो आ गया समझ में. समझिए ना बस. देखो. अभी ले आ गया हाँ वही है. जब यूज करेंगे फिर. बट वो, हाँ, वो विल डू एक्सरसाइजेस टुडे, पक्का करेंगे यार, तो आपको और समझ आएगा. Easy because it's the same pronunciation. So infinitive form is parler, and then participe passé is parler. Okay. When it comes to the second group of verbs, so ending with er, so take this er away and put I instead, and then so infinitive is choisir, and it will become for the past participe passé form choisi. Okay. Other category, but then many exceptions with this one. But anyway, so verbs ending with re. So you just take this re away and you put u instead. So a good example is vendre. Okay, and it will become vendu. Okay, so as I said, the difficult thing is that we've got many exceptions. So let's see. Well, the stars of the exceptions. So the first one is être, and it becomes été, avoir, eu, faire, fait, venir, venu, prendre, हाँ. pris, écrire. देखो अभी ये बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस की. तो हम्म. पहले उन्होंने बताया कि हाउ टू फॉर्म द पास्ट से कंपोज पास्ट पार्टिसिपल, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी. अब ये कह रहे हैं कि इसमें भी एक्सेप्शंस हैं. हम्म. तो ये क्या एक्सेप्शन है पास्ट पार्टिसिपल की, वो ये वाली हैं. तब वो आर का बनता है यू, फैर का बनता है फे, रूनी का बनता है वेन्यू, खान का फ्री, इक्रीर का बनता है इक्री. ऐसे. तो ये आपकी एक्सेप्शंस हैं पास, हाउ टू मेक द पास्ट पार्टिसिपल. सॉरी. ओके, ब्लेस यू. ठीक है जी. जी. Écrit, dire, dit, voir, vu, tenir, tenu, mettre, mis, ouvrir, ouvert, naître, né. Okay, so now what we need to see is the देखो अभी इतना क्लियर है आपको. हाँ इतना क्लियर है. अब वो आ रहा है या एत्र है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है. ठीक है. बस इतना इसमें अब तक ये इतना हमने इतना किया. हमने अब तक इतना ही किया कि आपको वर्ब पता होना चाहिए 16 वर्ब कौन से मतलब चलो अभी याद नहीं है, दैट्स टोटली फाइन. पता होना चाहिए 16 वर्ब एत्र के साथ करते हैं, अब वो के साथ करते हैं बाकी सारे. और जो आता है पास्ट पार्टिसिपल वो कैसे फॉर्म करते हैं हम. फर्स्ट कैटेगरी को इज वेरी इजी, अक्सा एग्यू. सेकंड कैटेगरी जस्ट आई. थर्ड कैटेगरी यू, एड्स यू आफ्टर दैट, राइट. उसके बाद देयर आर एक्सेप्शंस. तो आई विल ऐड दिस वीडियो टू माय वेबसाइट in this vlog as well. So just go there and watch 5, 10 times. Very good resuming video that explains the concept in a brilliant way. After that, like Gargi asked me certain books, and if you happen to find those activities passe compose in those books, you can practice. If not, uh, I will also send you some activity exercises that you can practice. हाँ मेरा मेरा रूममेट है ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक्चुअली बुक्स पई हैं if he finds it. Okay, so you can just borrow them from him and practice.
Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਦੋ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਈਸੀ ਪਾਰਿਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਸੀਗਾ ਦੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਹਾਂ ਡਿਡ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਲਰਨਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਚ yeah. ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਮੈਂ ਬਿਗਨਰ ਸਟਾਰਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵਰਜ਼ਨ and it's really good book. Before that, I couldn't find it, but eventually I found it, and I just send you an email that if you want to get this book, you please get this one. It's an awesome book. So, ठीक है ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ देयर if not just write on chat gpt I have A1 A2 level in French. Give me exercises for avoir être passé composé ta and just do that. Gargi prefers to practice it by the hand on the from the book and not from computer, so I told the books, but everyone is different, right? Present form of avoir or être, because that is the form you will have to use in the first part. Okay, so avoir is j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Let's see them again. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. And then être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. You can repeat them. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Okay, so a few examples now with avoir. J'ai mangé, tu as fini, il a écrit, elle a été. देखो अब ये मजे की बात में क्या है हम्म जो एत्र है ना हम्म इसको करते तो हैं हम मतलब पास्ट अब वार के साथ कंजुगेट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने जो एते है ना एते इट्स एत्र पर यही हम करते हैं कंजुगेट ऑक्सिलियर अबुआर के साथ यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं देखो मैंने एल आ ए टे हम्म मैंने नहीं कहा एल एल ए ई एस टी ए टे मैंने हम्म कहा एल आ ए टे यहाँ मैंने यूज किया अबुआर हाँ आर जो क्योंकि है एथर के साथ हाँ थोड़ा ना कंजुगेट होगा नहीं नहीं हुआ राइट तो Yeah. एतर वो 60 वर्ब कैटेगरी में नहीं आता खुद हम्म पर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने एथर इज एन ऑक्सिलियर ठीक है that we use to conjugate the verbs in the past tense to say that the past tense that the verbs in the past tense but एतर खुद होता है अबुआर के साथ ठीक है जी सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने और सेकंड इज जो है अबुआर उसका पास्ट लोग भूल जाते हैं उसका है यू nous avons eu that's avoir so I'm just taking a screenshot of that we will write these verbs first as well Nous avons eu, vous avez pris, देखो अभी ये अबुआ चल रहा है ना अबुआर के साथ मैंने कोई चक्कर नहीं है बू है कितने बंदे हैं नू कितने बंदे हैं सिर्फ यू यू कुछ पीछे है ही नहीं यूएस कुछ है ही नहीं है क्योंकि अबुआर है हम्म सो कोई चक्कर ही नहीं है देखो मैंने लगाया कोई ये मौजे तो चलो ठीक है हम्म बट जो प्लूरल वाले हैं देखो आप नू जावो यू तो यहाँ है ही नहीं है पीछे ई भी नहीं है और ई एस भी नहीं है कुछ है ही नहीं है तो इसमें अकॉर्डेंस नहीं आती अबुआर के साथ वे प्री उसने कर दिया ना रिप्लेस तो कर दिया दो काम को नहीं देखो मैं कह रहा हूँ अकॉर्डेंस अकॉर्डेंस मतलब कि सब्जेक्ट के साथ जैसे ओके आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर दैट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने लिख लिया साइड पे एक्सप्लिकेशन सो मुझे लगा पता आपको नहीं पता यार सो आई विल वी विल डू दैट नो प्रॉब्लम
Ils ont acheté. Elles ont choisi. चलो आगे चलते हैं. Okay, so we can repeat them again. J'ai mangé. Tu as fini. Il a écrit. Elle a été. Nous avons eu. Vous avez pris. Ils ont acheté. Elles ont choisi. Okay, so a few examples now with être. And so keep in mind that if you're using être, you will have to change a little bit your participative form. So देखो that's what in bracket that's what I was talking about before. So you see yes is arrive. If Gargi was to say, she has to write an extra e because Yeah. it's after we are using that. That's what I was trying to explain before, but now it got clear it's in itself. if the subject is feminine, then you will have to add a at the end. If the subject is plural, you will have to add s at the end. And if the subject is feminine and plural, you will have to add a s at the end of your participe passé. Okay, but then keep in mind that in most of the cases you don't pronounce them. Okay, so in this case we've got je suis arrivé, tu es parti, il est venu, elle est rentrée. So just one little second, because in this case it's quite interesting because elle is feminine, so we need and we have to put this final e, okay, but then rentrée, you can see that you don't pronounce this final e, it's rentrée, elle est rentrée, okay. Nous sommes restés, vous êtes tombés, ils sont descendus, elles sont allées. Okay, so let's repeat that again. Je suis arrivé, tu es parti, सही है good. Yeah. il est venu, elle est rentrée, nous sommes restés, vous êtes tombés, ils sont descendus, elles sont allées. I do hope it was clear for you. Don't be afraid to watch the video again and again. Have a nice day. Au revoir. Vincent, Monsieur Vincent, stop presenting. Where if you want to watch this video 5 times to better understand the topic, don't hesitate. It's worth your time. Okay. So yeah. So just a quick revision. What we just saw. How we form the parts passé is we take Gargi Zinda. Gargi. ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਾਰਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਾਂ। So yeah. Gargi बेचारी crash हो गई बहुत ज्यादा ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਔਖਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਟਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਆਈਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਸਾਲ ਆਈਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ +2 ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਆਈਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੈਕ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਈਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਈਲਸ ਲਾਈਕ ਐਨ ਆਈਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ
ਸੋ ਉਹ ਯਾਰ ਪਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੇਸ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਮੈਚੁਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਐਥਰ ਦੇ ਅਵੁਆਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਸਲ ਪਾਸੇ। ਸੋ these are all the verbs, few verbs from the list that are from with at that you tend to use. There are few more verbs here in this list. Like we discussed, you need to cram these two by heart, passé composé, avoir and être, and you all know this. Now, so since we are, you see there is no, in this photo there is no nothing after manger, no e or s, because we have used auxiliary avoir here and not at être. So when guys, when you see, when I say auxiliary, so what should come into your mind? Auxiliary, auxiliary. So it's être or avoir. That's what should come into your mind when I talk about auxiliary. Okay, avoir or être. That's it. Now ਤਾਂ ਵੀਰੇ comes ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਆਰ ਵਰਬਸ ਇਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਵਾਰ ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਐਚ ਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ? yes, yes. ਵੈਦਰ ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਮੌਂਜੇ, ਜੇ ਮੌਂਜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਸਵੀ ਜ਼ਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਰਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਸਟ ਆਈ ਐਡਡ ਐਕਸਟਰਾ ਈ ਦੀ ਗਾਰ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋ ਚੇਂਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਗਾਗੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੌਜੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮੌਜੇ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਤਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯਸ਼ਵੀ ਜ਼ਾਲੇ, ਗਾਰਗੀ ਕਹੂਗੀ ਯਸ਼ਵੀ ਜ਼ਾਲੇ, ਬਟ ਲਿਖੂਗੀ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਈ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹਦੇ ਉਲਝ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ 16 ਵਰਬ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਓ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਐਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਐਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨੋਟਸ ਆਪਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਆਪਦੇ ਦੇ। So I just try to explain my view of learning, my point of view, how I learned these by opposites method. So ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਬਲੌਗ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬ ਯਾਦ ਹੋਊਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਲੇ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਆਲੇ ਦਾ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਹੈਗਾ ਆਲੇ। ਸੋ ਆਲੇ ਦਾ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਹੈਗਾ ਆਲੇ। ਰੈਸਤੇ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਰੈਸਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਦੈਟ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ES ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਤਰ ਦਾ ਏਤੇ ਆ, ਅਬੂਆਰ ਦਾ ਯੂ, ਫੈਰ ਦਾ ਫੇ, ਵਨੀਰ ਦਾ ਵੈਨਿਊ, ਖਾਨ ਦਾ ਫੀ, ਇਖਰੀ ਦਾ ਇਖਰੀ, ਦੀਰ ਦਾ ਦੀ, voir da vue, tenir da tenu, mettre da mis, avoir ouvert, naître né. So these are some exceptions that you need to learn. ਜਦੋਂ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। To make it more clear, I have exercise for you guys. So
You help me to please complete, and it will make the things more clear. So ਇੱਥੇ ਸੋ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਐਤਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? LA ਐਥ ਐਤਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? L is a thousand plural. 1000% probably S ਆਊਗਾ L song. L song Song arrivé en retard. arrivé ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ plural ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ S ਵੀ ਪਾਤਾ ਰਾਈਟ ਪਿੱਛੇ es ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ L ਹੈ, ELLES। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟਰਾ E ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਉਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ plural ਹੈ ਫਿਰ ਪਲੂਰਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੜਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੈਮਿਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਮਿਨਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼, ਤੇ ਫੈਮਿਨਨ ਪਲੂਰਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਪਿੰਕ, ਤੇ ਮਸਕੂਲਿਨ ਪਲੂਰਲ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਲਰ ਆ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਕਲਰ, ਹੋਰ ਕੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕਲਰ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਫੈਮਿਨਨ ਲਈ, ਪਲੂਰਲ ਲਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਿੰਕ, ਮਸਕੂਲਿਨ ਪਲੂਰਲ ਲਈ ਤੀਜਾ ਰੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆ ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ ਯਾਰ? ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ? ਮਾਂਜੇ। ਮਾਂਜੇ Is it in 16 verbs in the list? ਨੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਬੂਆਰ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ? ਅਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੂਆਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਜੂਗੀ? ਨੂੰ ਆਵੋ nous avons ਨੂੰ ਆਵੋ nous avons mangé une pizza। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਬੂਆਰ ਹੈ, I didn't add anything, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ masculine, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ। it's nothing here, so it's nothing here, question mark, ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? because we have ਅਬੂਆਰ here। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਥੋਮ ਦਾ ਲੈਸ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਅਵਾਰ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਮ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਤੋਮ ਸੀਗਾ ਤੋਂਬੇ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਚੂਹੇ ਚੌਂਬੇ, ES ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ EST ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚੂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੈਮਿਨਨ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਸੋ ਫੈਮਿਨਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੂ ਇਫ ਇਟਸ ਗਾਰਗੀ ਸੇਇੰਗ ਯੈਸ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਈ ਆ ਸਕਦਾ ਇਫ ਇਟਸ ਅ ਫੈਮਿਨਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਐਲ ਏ ਤੋਂਬੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐਲ ਆ ਗਿਆ, ਐਲ ਏ ਤੋਂਬੇ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ। dans l'escalier, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਟੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਟੂ ਇਜ਼ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਗਾਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਵੀ ਥੋਟ ਦੈਟ ਅ ਬॉय ਔਰ ਮੈਨ ਫੈਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਐਲ ਏ ਤੋਂਬੇ। ਐਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਫੈਮਿਨਨ, ਪਿੱਛੇ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ, बट इट्स फेमिनिन सिंगुलर, सो आएगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट प्लीज। Fini. Il a fini. Il a fini, très bien. Avoir और fini। Yeah. Partir. Gargi, participate. Gargi, I think is not there now. No. So दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? Partir.
party, party, क्या आएगा? चलो मैं पार्थी आएगा वर्ब एत्र, राइट? सो बताओ अभी। vous vous êtes parti, vous êtes parti. So parti is a verb partir, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ past participle. Partir is a verb and the past participle of the verb is this one. Parti, ठीक है जी। सो अभी देखो यहाँ पे आपने vous êtes parti, तो पीछे यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि because it's vous, it's more than two. सो और ये है इसका कलर, ये वाला थर्ड वन। अभी कुछ हुआ क्लियर? So party is from 16 words, right? Yeah. Next, please. j'ai oublié mon sac. J'ai oublié. अब वो Yeah. आ रहा है यहाँ पे ना? Yeah. Très bien. तो because ये यहाँ पे बार होगा कुछ नहीं है, right? Next. il a ये है नेत्र। नेत्र है, और ये है वर्ब इसका क्या नेत्र। होगा नेत्र means to मैंने take भी birth or to come to एक earth. बार ये भी अब और क्या होगा LA ने। LA Next, अभी ने आ गया पीछे वाला, so it's she, so it's just green color. Black. Il ये भी at के आते sont ils sont ये descend descendu, très bien, इथे यात्रा होगा, but क्योंकि ये masculine है, so just S and not E before that. Descendu. Verb हैगा descendre, ਇਹਦਾ past participle हैगा descendu. descend कितना लिख लीजिए थी? Okay, anyway. Sure. Descendu. That was it. Descendu. देखो, elles sont arrivées, nous avons mangé, il est tombé, tu es tombé, elle est tombée, il a fini, vous êtes parti, j'ai oublié. Okay. अभी now they are asking to make an accord. अभी पहले कर दिया उन्होंने, right? And this for you, and they just ask you it should be at or avoir. Now they're asking, they gave you verb, and now they're asking to make make an accord. So you should know the past participle of the verb, and then you can see accord. So अभी क्या आएगा यहाँ पे? L party party, because it's L. यहाँ पे I will oh write it's थोड़ी है okay yeah
या सो यहाँ पे कौन सा कलर था? फेमिनिन सिंगुलर, Green. ग्रीन। या परफेक्ट। Nu avoir en avoir दा की होगा व्यू, IR है वो व्यू व्यू nous avons vu, क्योंकि यहाँ पे अभी अबुआर है तो कोई चक्कर नहीं, पास पार्टिसिपल है या ये ई है, नो नो प्रॉब्लम, वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट बिकॉज़ इट्स अबुआर है। nous avons vu un film passionnant। अभी आगे, ये भी avoir है जी आशिते अभी यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी ये पहले आएगा उसके, तो हम चल ये नहीं करते अभी। तो यहाँ पे आशते आएगा, बट क्योंकि ये फ्लर पीछे आएगा तो एस आएगा पीछे, बिकॉज ये इसके सब पहले है, हाँ वो सीओडी पहले है, बट लेट्स नॉट डू दैट, वी आर नॉट। बट वो प्लूरल है ना हाँ आशिते मतलब प्लूरल है, लेकिन अब वार है वो उसके पहले, सीओडी उसके पहले है, तो यहाँ पे आएगा, बट लेट्स नॉट डू इट। हाँ नोट क्या क्या पहले ही बहुत कंफ्यूजिंग काम चल रहा है, इसके आगे ये तो ओके, लेट्स कीप इट सिंपल। इल्ज़ों, अभी क्या आएगा? ये भी ये एत ऐतर ठीक है। रंट्रे रात के इज द पास्ट पार्टिसिपल, या सो पीछे एस आएगा, यस और नो? यस क्योंकि प्लूरल है एग्जैक्टली। तो ये है आपका, ये कौन सा कलर है यार ये? ये प्लूरल है ये हाँ सही डाला नहीं, कलर कौन सा है ये? ब्लू टील ब्लू थोड़ी है यार, टील है टील पता नहीं है, गार्गी से पता होगा। नहीं टील है तो टील ब्लू वुजावे, वो जावे फ्रांस वो हो गया वो भी अच्छा है ऐतर नहीं थोड़ी है। वो वॉर है सॉरी सो फ्री, इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है फ्री। थ्री vous avez pris des notes, तो अब वो आ रहा है तो कोई चक्कर नहीं है अकॉर्डेंस की, नो प्रॉब्लम। la porte était अगली पर में était fermée, अभी है, अभी ये ऐतर है राइट, सो était इस लिम पार्फे में, इट्स लिम पार्फे राइट, ऐतर का भी लिम पार्फे है, तो यहाँ पे आएगा फर्मे। ला इन्फॉ जुए ये अवार है तो अभी जुए अभी एक मिनट है यार, मैं एक दूंगा तो नहीं। la porte is feminine, गार्गी जा रही है, बाय 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 बाय, टेक केयर। बाय बेटा, थैंक यू। हम करेंगे पास कंपोज les enfants ऑन जुए ये अवार हो गया ते जुए द पास्ट टेंस की हो गया जुए dans la jardin, गार्डन में वो खेल रहे हैं हाँ les पहले enfants जुए jouaient, एस के साथ क्यों? जुए या वो आ रहा है, या उड़ जाएगा, हाँ बट वो प्लूरल है ना लेजन बट कोई चक्कर नहीं है, अब वो आर के साथ कोई और चक्कर मैंने नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ओके ओके यही तो बता रहा था आपको, देखो नू भी प्लूरल ही है। वही समझ आ गया ना समझ आ गया मैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया समझ कोई दिक्कत नहीं। अभी ये है वर्ब प्रोनोमिनल राइट, इसके साथ आएगा, ये अभी एत्र इल से ये कैसे, है क्या एल से मतलब ये मतलब ओके वो हो गया कॉन्जुगेट हो गया ठीक है कैसे वर्ब है, हम्म ये हमने किया यार, देखो पहले तो हमने ऐसे ना क्यों हो गया रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की आपको पता नहीं होगी, से लेवे जैसे, ये प्रेजेंट टेंस में करते हैं हम, मलवे, म tu t'élèves, je me lève, इससे पहले तो प्रेजेंट में करते हैं हम, आई थिंक आपने प्रेजेंट में करी नहीं थी। ब्रेक वो एथिक में आएगा कैसे ये बताता हूँ आपको कैसे। tu t'élèves, il s'élève, देखो यार थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना।
Nous nous levons. देखो पहले तो हम कर रहे हैं इसका प्रेजेंट में, राइट? vous levez, il se lève. ओके हो गया जी? हम्म। ये तो हो गया तो ये प्रेजेंट की कैसे बात। कैसे कैसे होता है? से लेवे जेस। ये वर्ब ना, मतलब ये जो वर्ब होते हैं इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। जो वर्ब खुद पे एक्शन करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम अभी। अभी इसका जो है ना पास्ट टेंस, वो हम करते हैं एटर के साथ, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। सो इसका बन जाएगा je me suis levé, जब मैं खड़ा हो गया खुद से। je जर्मन। suis levé, tu tu t'es levé, il s'est levé, nous nous sommes levés, vous vous êtes levé, ils se sont सो देखो ये है। अभी क्योंकि ये एटर है तो मैंने यहाँ अकॉर्डेंस करी है, तो इज दिस कलर, vous êtes levé, तो इस केस में अगर मान लो पीछे अभी लड़कियां हो तो फिर पीछे आएगा es, elles se sont levées, ये आ जाएगा आपका es। तो ये कौन सा कलर था? फेमिनिन प्लूरल सिंगुलर कर लिया गया। समझ रहे हो बात? ये है रिफ्लेक्सिव फैजा और ये है रिफ्लेक्टिव पासे कंपोजे, पासे कंपोजे रिफ्लेक्सिव। मतलब क्या बना रिफ्लेक्सिव का? जो वर्ब खुद पे एक्शन करते हैं, ओके। जैसे मैंने खुद अपना फेस धो लिया, जैसे मैंने खुद से अपना दांत ब्रश कर लिए। सो जो वर्ब्स एक्शन खुद से करते हैं वो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स वो यूज ऑक्सिलियर एट इन पास्ट कंपोजिंग। तो पहली बात तो हमने यार रिफ्लेक्सिव प्रेजेंट में नहीं करे, तो ये पास से तब का मतलब बनता ही नहीं है, बट ये आ गया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, ये ऐसे बनते हैं। तो पहली बार तो हमने पहले ये ही नहीं हम पक्के करे, राइट? जब हम ये करेंगे पहले की प्रैक्टिस करेंगे, वी प्रैक्टिस देम अ लॉट, आफ्टर दैट हम यहाँ पे आएंगे पास में। तो हम पहले ये करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक आ गया था एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया आपको, बट हम ये इसको करेंगे नहीं। ओके जी, हाँ जी। चलें आगे। elles sont arrivées en avance। अब बताओ ये सही है कि गलत है? elles sont arrivées, elles sont, सो ये arrivées, हाँ ठीक है ये तो। यहाँ पे एक मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, ई। है ना? सो हाँ से क्योंकि वो है फेमिनिन है तो arrivée आएगा। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे एक मिसिंग है, elles sont arrivées en avance। j'ai lu tous les livres
इसका बताओ। ये मेरे समय रेखा से बाहर। हाँ, जे लू की हो गया, लू थी। मैंने पढ़ ली। ये लीर है वर्ब, इसका वर्ब या, है लीर। पढ़ ली मैंने। हाँ, ली थी। पासिक पास्ट पार्टिस पासिक पास्ट पार्टिस। फिर ठीक है भाई, ये तो हाँ हाँ, सही है। फिर सही है। ब्रे, ब्रे ब्रे बोलो, ब्रे। व्रे 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 सेवरे, सेवरे व्रे मीन्स इट्स ट्रू, इट्स राइट। ओ तो हाँ, अब रे। ये फिर आपका सीओडी आ गया, ये छोड़ो, आप ये नहीं करते हैं। न्यूज़ आप वो बांधो, ये बताओ। न्यूज आवो वांदू नोत्र वचू। वो अपनी गाड़ी में, हमने अपनी गाड़ी बेच हम दी। अपने अपनी गाड़ी बेच दी। तो इसका नु आवो वांदू नोत्र वचू। ठीक है, व्रे सेवरे। व्रे। यस, सेवरे। बिकॉज अब वो आ एल रहा है तो वी डोंट नीड टू राइट। या हाँ हाँ। एल से लमा, लावे, लेमा, से लावे ले, लेमा। उसने अपने हाथ धो लिए। वो तो अपने हाथ धो चुकी है। या एल से, तो ये पास कंपोजिट है। एल से लावे लेमा। ठीक है ये, क्योंकि वो खुद पे भी यूज हो रहा है। हाँ, बट फिर क्वेश्चन पूछो अपने आप से भी, एत्र है, वहां पे एत्र ई आएगा। आएगा ना, एक आएगा और। ना। फिर फॉल, फिर फो हो गया, फिर ओ कैसे हो होगा? गया, वहां पे ई बिकॉज आएगा। यहाँ पे ये ई आएगा। पकड़ लिया, यस, पकड़ लिया, पकड़ लिया। पकड़ लिया। अभी इल ओ, ils sont so it's gonna be avoir यहाँ। रियूसिस है क्या? सक्सेसफुल, Yeah, सक्सीड। they were réussir means to be successful. They succeeded. Ils ont they réussi. they succeeded in the exam, right? Exactly. In their exam. Their Liu il, examination. il ont réussi exam, vrai, मुझे नहीं, यहाँ पे अब वो देखो, अब वो आ रहा है हाँ तो उसके अवार है। पीछे ऐसा थोड़ी आएगा। अच्छा हाँ, अवार के पीछे नहीं आएगा। वाह। तो ठीक है, ठीक है, ये मैं पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया। चलो कोई नहीं। अभी ये बताओ। आले, ऐसे कंपोज, आले उस सिनेमा। First of all, ask yourself, is it with eth or avua? दिस इज विद एथ। Okay, बनाओ अभी क्या बनेगा इल इसका। ऑन, इल सॉन्ग, Ils, elles sont, उस सिनेमा। अच्छा, आले, ई हाँ, डब्ल्यू एन एस। इल सॉन्ग आले उस सिनेमा। फिनीर, फिनीर भी उससे ही होगा। हाँ, एच, एच। कितने से हैगा 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। फिनी नहीं हैगा, मोत्री हैगा, और डेथ होगा। ते त्यू त्यू आ फिनी। That's it. अभी चलो, आई कैन हेल्प यू है, je me suis réveillé। मेसी, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ यार, मजा आ रहा करो है। करो 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 करो। सो जेमेसी रिवील, ये एक ही होता, रिवील ही I होता। got up, I got up। आई गॉट अप, जेमेसी से कट दांगे रिवील ये। जब देखो, पहले आप तो ही गल कर रहा है ते, हाँ ते वो एक ही आऊगा ई ते वो जेंडर सानू पता नहीं। हाँ, जेमेसी रिवील ये न्यू वेंदू वांदर केड़ा वर्ब है, एतर है बुआर। अवार है था। nous avons Nous avons vendu vendu
Not Naître en France. Live. I live in France. Naître. Oh, he No, died in France. no. She Naître he ਹੁੰਦਾ died ਵਾ in. to get to be born. Oh, to be born in France. And मैं मारता ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀ ਆਵੇ नहीं, I was correct in some yeah, correct in some sense. in some sense. Il est il est net with the ਨੇਥਰ ਦਾ ਨੇ ਹੁੰਦਾ right ne the past participle. yeah That's it. il ਨੇਥਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ past ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ item net. ਜਾਂ ਇਲੇਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਨੇਥਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆਹੀ ਇਦਾਂ ਵਾ ਯਾਰ ਸੋ ਆਈ ਸੈਂਡ ਯੂ ਦਿਸ बहुत क्लियर हो गया ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ pronunciation ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਮੈਂ sentence framing ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਰੂਮੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅ ਲੋਟ ਬਟ there is no other alternative. So let me stop the recording first.